Yes, I'm here. Can everyone see me? I'm guessing that is a yes. So, welcome to Kitaabi Cabins. And मेरा नाम तान्या है. I have started a new show called Tanya Talkies. जैसा कि आपने previous episode में देखा होगा, this is a show where I talk about books, all the books that I love reading, all the books that I've read in the past, मुझे बहुत पसंद आई हैं, and also encourage all of you to read along with me. So let's get started. एक क्विक चेक इन करते हैं उससे पहले. आई हैव सो मेनी बुक्स दैट आई वांट टू डिस्कस टुडे. मोस्टली क्योंकि आज का टॉपिक जो है इज अबाउट माय फेवरेट चाइल्डहुड रीड्स. एंड मैं चाहती हूँ कि सब के सब मेरे साथ डिस्कस करें दैट व्हाट डिफरेंट बुक्स यू हैव लाइक्ड एज a kid, growing up, what is it that you have enjoyed reading the most? um, right, so let's quickly start with that in the chat. Let's start by talking about who is like the favorite most author of ours of all times. I will keep monitoring the chat. मैं साथ साथ में बोलती रहूंगी. I'll keep checking the chat, right? And in case I sort of am a little late to get to your chat, just keep putting it out there और मैं पढ़ती रहूंगी. I really like कि कुछ लोगों ने एनिड ब्लाइटन से स्टार्ट किया है. आई एम सो हैप्पी क्योंकि एनिड ब्लाइटन वाज गोइंग टू बी माय नंबर वन. लाइक ये मेरा टॉकिंग पॉइंट था यार, छीन लिया मुझसे. I was gonna start by not only discussing कि मेरी favorite book क्या है, मेरा favorite genre क्या है, but I also wanted to talk about who my favorite author would be. So, my favorite childhood book, growing up, there is always a 50-50. There's always a debate in my head. दो authors हैं मेरे लिए. It's Roald Dahl and Enid Blyton. So give me a hands up if you have really enjoyed Enid Blyton books. I see so many responses right now. Famous Five, oh my goodness. Secret Seven, she's written a bunch of these. Island of Adventure, मैंने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है, so I'm reading it out from there. Amelia Jane, the naughtiest girl in school, right? One thing I loved about Enid Blyton is that her world is very make believe. And for kids, right, it's a whole sense of like amusement and just lets your imagination run wild. That is a big part of the kind of writing that she has. Enid Blyton was the first novel that I have ever read, that somebody has written this in the chat as well. Um, okay, there is an unpopular opinion. Let's pick this up. Enid Blyton's okay, but we're not diversifying children's literature. Like, I'm not going to fight something like this. I get it. But also at the same time, she's like one of those, like, when you look at children's literature or kids' literature prima facie, you're like, okay, I want to, like, as a kid, right, or a parent of a very small kid, you go to a scholastic fair, right, or you walk into like one of these libraries and you go, and the first catalog that they give you for children's books, I mean, by far what I know is always going to be ki haan, Enid Blyton is going to be somewhere on that list, definitely on top. And I get your point about how we need to diversify a little more, and that's where we will talk about other authors. And I would love to know from everybody else at this point, ki who are your favorite authors, right? Uh, let's see what are people writing. I love it. Somebody wrote on the stream कि the Scholastic Fair. Oh my God, मैं कितना रोती थी. पता है, it was a thing back then when you were a kid growing up and you used to have those fairs, and वो मेले sort of लगते थे in all of our school grounds. I'm 100% sure जितने भी kids who've grown up in, like, um,
be it a private school or a government school. I think we used to have these universal scholastic fairs, and I used to love them. Somebody's written that they remember reading Kidnapped, which was their first novella. Interesting. I will talk about this. Preetham, thanks for bringing this up. There's a difference, when you talk about a novel and a novella. And if there is somebody in the chat right now who can tell me what that is, like, what is that thin line of difference between these two works of fiction? I mean, it's basically the same, but why do you add an A at the end of novel? Like, why do you do that? Let's see if somebody can. In fact, Preetham, if you can tell me why did you use the word novella and you know enlighten our audience? Right. Basically, you got it right. So that's the entire point of a novella, which is like a narrative prose. Definitely something that comes under the broader bracket of like fiction work, and it's shorter. Like, so essentially, a very very short novel. Like you're looking at a standard novel would have what 80,000, 90,000 words, and it's a lot, right? A lot of pages to flip. These are like lesser pages to flip, basically. But that's very interesting. Yeah, cool. Somebody's written that it's lesser than 50K words, which is basically what we were getting at. um बहुत सारे recommendations और आए हैं, but I want to go one by one. Like, I don't want to skip into this immediately. So we were at our favorite authors. I'm glad that some people have written Enid Blyton. We started off strong. I think she's been one of my favorites. Now that I take a trip down memory lane, I want to talk about my earliest sort of, जैसे कि एक रीडिंग मेमोरी एट कोर, you know. um let's start by asking the chat as well कि ऐसी कोई memory of yours. I think Scholastic Book Fairs was talked about. That was a big, big. I think everybody in the chat just jumped and started talking about it. I'm so glad. मेरे लिए भी Scholastic books definitely, because we used to have those fairs in school and we used to go and attend them, and एक book लेते थे. And then there were all these offers, हाँ, कि buy one get one free. तो तब तो कोई spending power, earning power कुछ नहीं होती थी. तो parents से जितना भी money मिलता था, जाके I used to make a list of things कि अच्छा ये मैंने किताब लेनी है. And this is where I will talk about Geronimo Stilton, right? Oh my God, I feel like कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी I think you guys are still like, coming in and warming up to it. But if you are here and you have heard the name of the book Geronimo Stilton, please give me a yes in the chat. The Scholastic Fair was a litmus test of parent approval. I mean, I wouldn't disagree. Basically, like, your parents knew that they've done right by you when you used to go and tell them, ki, oh, this is our receipt for the Scholastic Book Fair. Because otherwise, I think most of us are like spending money on like other things. And then this is something which used to get uh, approval, like a thappa from parents, ki, haan, you're doing the right thing. Geronimo Stilton, coming back, one of my favorite characters, क्योंकि it was a very interesting thing for me कि oh, there's a small little rat who's literally navigating through his animated world. Not even a rat, rather a rodent, right? And the entire setting was such जहाँ पे सारे animal या animated characters थे. And I used to love reading उसके बारे में. उसकी एक sister होती थी, Thea Stilton, right? And there were tons of books. Yeah, I think Geronimo Stilton has made minted money and minted copies, indeed. So I used to like those books a lot. Uh, Somebody's written that they really did not grow up with Geronimo Stilton because he had a terrible librarian.
But yeah, definitely Aesop's Fables, Enid Blyton, we will come back to them. Geronimo's written, why I brought up this point was because I wanted to introduce something to the chat, and I thought that this could be something we talk about next. Um, but usse pehle, let me check if anybody else who's read Geronimo's written just wants to quickly let me know. The Stilton wordplay was very appreciated. True that. True that. He was like, imagine like a rat writing, and then I mean, I still remember it's kya tha wo? It's cheesy-licious and mousse-licious and kya words. It was interesting to say the least. But what I wanted to talk about now is ki there is this concept. In fact, in most of these kiddie books that you read, it just helps children, I think, open up and also realize that gradually you are going to enter a grown up world. But how do you sort of embrace those challenges, or how do you uh, face it like headstrong, right? So the concept that you can see flashing up on the screen, a very big word. I'm going to break it syllable by syllable. So it's anthropomorphism, which is essentially a literary tool wherein, like, you've seen most of these authors. I'll start with a few names, like Roald Dahl is one, Ruskin Bond is another, Rudyard Kipling, Enid Blyton, right? She writes a lot in her books. I've in fact got two books of her here. एक ये है फेमस फाइव, डेफिनेटली विल कम बैक टू इट. फेमस फाइव में आई डोंट थिंक कुछ ऐसे एनिमल कैरेक्टर्स हैं, देयर जस्ट फाइव किड्स एंड देन देयर डॉग. एंड एक और है वेयर आई विल टॉक अबाउट दिस ट्रिकस्टर कैट. इट्स these different stories of magic and mischief and basically the make believe world that we talk about, right? So have you like sort of wondered ki why there are so many books for kids that people or like parents choose जहाँ पे there are talking animals rather than people, है ना? That is very interesting for me because as a kid, like, even I used to pick up a book like that, even if it was a very one of those वो जो books जो initially याद है जब हम बहुत ही बिल्कुल ही बचपन में होते थे, एक दो साल के बच्चे होते थे, and then our parents used to make us flip those pages and those fluffy cats or ducklings, and you've heard all these stories about ugly duckling, about the crocodile and the monkey, and there are so many animals in this, and I always used to wonder कि मतलब हम humans की बात तो कर ही नहीं रहे हैं altogether. So for like the audience and to break down this concept, anthropomorphism is basically when you start assigning humanistic or anthropomorphic characteristics to an animal, right? Basically, an animal starts behaving like a human, and it's very different, right, from um, the normal or the norm that you have, and that's basically what defines fiction here. So I want this to be something that we talk about now, um, because a lot of comic books, right, have characters like these. If you can name a few, like, I would love to see if there are people who have read any comic books that have had animal characters in them. Three Little Pigs, uh, Amar Chitrakatha, interesting. Aesop's Fables, चंपक टू, राइट? चंपक में बहुत होते थे, एज फार एज आई रिमेम्बर. और टिंकल में भी बहुत होती थी. टिंटिन का जो डॉग था स्नोई, हैज एनीबडी रेड टिंटिन? कैन यू शाउट आउट इन द chat and tell me किसने पढ़ी है? Till then, I'm also gonna keep flagging some of these comments that are coming. Tinkle में somebody has written there was Kalia the Crow and Kapish. मेरे को नहीं याद, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गई कौन था. मैं क्विकली लेट मी गूगल हु इज कपिश. How have I forgotten this? Oh, the monkey. That's who you're talking about. Acha, interesting.
Well, Snowy is not much of a talker, but much of a thinker. That's true. I really like कि Tintin में there was a lot of focus on the adventures, and there was so much of conjoined effort. Did you see? There's so much of like collaboration. Um, just in general, like I think animals and humans working together, synergies matching and energies matching. That is something that was very interesting. So, favorite comic books, lots have come up. Amar Chitra Katha, Aesop's Fables. There was a mention of Tinkle. There was a mention of. Let me, in fact, read. In fact, from the. So I had run a little uh, poll before the stream, and मुझे बड़े सारे recommendations मिले थे. I want to read some of them out. Comic books as such इतनी नहीं है इस list में, but there are many others. So we might as well, skip to the other ones. Right. All-time favorite characters. This is something. Let's talk about this. मैं अब सुनना चाहूंगी after discussing that Geronimo Stilton was a favorite. Who were your favorite characters, right? Let's start with mine, because like give me some spotlight and center light, because I'm the only one talking here. But at the same time, I'm trying to make this as interactive because I've got like 10 things going on and I'm just checking the chat as well. But merely my top five characters. Um, Number one, it's Junie B. Jones by Barbara Park. I don't know how many people have read these books, but when I think I was quite young. मैं 7 या 8 years की थी. What grade is that? I think second grade या third grade होता है. तब ये मैंने बुक सबसे पहले स्टार्ट की थी. It was like a series, and Junie B. Jones was one of those very naughty characters, like something similar to how Enid Blyton has painted her Amelia Jane, right? So similar to that. Junie B. Jones was one of those characters who was always getting into a lot of mess, and untangling that mess and just reading about her life was really fun in general. Miri's second favorite book that I wanted to talk about, and also a character that has like stayed with me, है ना? It's become that one over personified character in my life, because when I was growing up, she was a big inspiration to me. Like, seriously, a female character given so much independence, given so many character traits which are not very often associated with a female protagonist in books. Do you get what I'm saying? Matilda, written by Roald Dahl, is one of those books wherein this small little girl, who's literally a genius, right? She's in I don't even remember her age. I think वो 10 years की होती है या 11. Please feel free to correct me अगर मैंने कुछ गलत बोला हो. But she's very young, okay, and she's adopted by a family. She is an orphan, and this kid, bloody genius, man. She used to read so many books. Like, I don't know if you can see that little rack in the corner, but that is not even quarter of what this girl's voracious appetite or like consumption for books was like, right? Because she used to like borrow so many books, and the best part about the book was that she didn't have the means for it. Like, that is where making reading accessible, and always ensuring that libraries are free and open and accessible to all, um, becomes a point of discussion here. Like, don't you guys agree? I'm gonna take a quick pause. I want to see. Yeah, right. Like, look, people have also written the same thing, that she had a biological family. Adoption was later on. Fair enough. Fair enough. I might be wrong here. She was 6. She was definitely not 10. So this is actually the right thing. Matilda is the OG booktuber. है ना? मेरी जरूरत क्या थी? Get her instead, like, replace me. It shouldn't be Tanya Talkies, it should be Matilda Talkies now. But yeah, basically
Matilda was one of those characters for me because they had made her very independent, especially Roald Dahl had done it. All of his other books too. I think Charlie and the Chocolate Factory was a favorite too. Huh? You guys, have you read it? Have you seen the movie also? Insane. Like, I like the movie and the books both. The twits too, मैंने लिखा तो था इसके बारे में, but I only remember that it was a very gross book. Like, I don't think I liked it too much because there were those characters, those two twits, and very unsanitary, unhygienic. Were they even human beings? I don't even remember, but that was one as well. Um, Right. So the next book that I want to talk about, I keep digressing. One of my favorite books. Like, I really want to take good 5 minutes to talk about this book. Judy Blume was one of those authors, and now I've grown up a little bit. Now with this passage of time spent on this stream, and also obviously passage of time growing up, when I turned I was almost 11, 30. No, 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 no. 13. Let's say 13. This is when I picked up his book. My mom had introduced this book to me. And she's very well known as an author, especially amongst teenage girls. She's known to write books in a very lucid fashion, wherein girls who are still blossoming and just at the brink of like womanhood. And I can go, I can be all poetic about this, but she basically, she created this character, Margaret, who was constantly like questioning her beliefs in life, who was constantly questioning if she's doing the right things or not, and all those teenage things, that teenage romance, teenage love. The first time she gets to wear a bra, the first time she gets her period, how could she talk to her friends about it? A lot of hush hush and a lot of whisper and taboo around periods at that time was sort of busted through this book, and I really liked it. Like, because quite frankly, when the first time I started menstruating, I was introduced to what sanitary napkins, but this book takes you through a range of menstrual products. Like, she herself gets her hands on like tampons and sanitary napkins, and I'm like, wow. I mean, when I was growing up in India, the kind of, definitely access wise, I would definitely say that my reading was taking me places. Like, it was very international in that sense. But at the same time, I also felt that notable discrepancy between the kind of reality that they were living and that we were living in India, or what she was painting for these characters. Margaret ho gayi, yeah, there might be tens and thousands of others that Judy Bloom might have just had in her head, but she didn't just put it to paper. So that notable discrepancy that I'm talking about, that I used to feel a lot. Like, India mein utne characters, itni bold feminine characters. Like, I don't know if you've noticed so far in my list, Junie B. Jones, maine bola, Matilda bola, I talked about Margaret. They've all been women, right? And these are my top three bangers. So all the books that I've liked, and they've all had good, strong feminine characters. Slightly Western, but that's just how sad and how the reality of it is. In fact, in case you guys know any Indian authors, Preeti Shenoy is one, but again, she writes, very rom-com, lovey-dovey. And like I said in like the last stream as well, rather lovey-dovey. I don't read too much of it. Princess Diaries. That's interesting. Somebody has talked about Princess Diaries too. Yeah, definitely. Princess Diaries also was a whole when Anne Hathaway came in the final, like the movie adaptation of it. I really loved it. I was so charming. And Julie Andrews has been a personal favorite for me because I've done musical theater in my life, and for about 3-4 years I've performed music like Julie Andrews, Spoonful of Sugar, and Sound of Music, and all those wonderful like uh, musicals that she's been a part of. I have adored her completely. Um, but apart from obviously Princess Diaries, there were so many other like these books that
Oh, right, right. Nicholas Sparks that you have talked about. Again, lovey-dovey, man. Like, no. For me personally, I would still go back to something that's a balance of right. I feel like there are other authors, but I'm not gonna delve on this too much because Nicholas Sparks is not a personal favorite. Sorry. Sorry, fight me. Harry Potter, next. That's what I wanted to talk about. My next favorite is Harry Potter. Let's see who liked Harry Potter. Tell me your favorite, in fact, quotes from the book Harry Potter. I have one that's going to flash up on the screen. If you can tell me before it comes up who has said this. Yeah, मैंने लिख दिया. She, I wrote Albus Dumbledore. Up to there's no point of it. Anyway, so I'm just gonna quickly read it out as well. So it says that happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. And Albus Dumbledore says this. Um, which was your favorite Harry Potter book? Half Blood Prince. And what was the one where he meets his uncle for the first time? The third part, I guess. Interesting. These are the quotes that people have sent. I never read much of Harry Potter, but the films were fun. Oh my god, don't even get me started. Like there is so much now. Um, Personal opinions about the author, I'm going to keep to myself, like I did earlier with Nicholas Sparks, and I just shut myself. Um, J.K. Rowling in the recent past has not given me much reason to really trust her writing so much. Prisoner of Azkaban, yeah, that was the one, right? Where what's his name? The uncle. What's his name? Harry Potter का जो uncle होता है. Can somebody send it in the chat? Philosopher's Stone. Yeah, it was the favorite. So that idea of magic realism, and that is something that's very predominant in her book. Sirius Black. Thank you so much. Yeah, that was Harry Potter's uncle in Prisoner of Azkaban. So yeah, I mean, I remember Harry Potter being one of those characters that I used to really like because again, one of those kids who was an orphan but had these deep dark secrets, and then a whole good versus bad, um, uh, evil versus the truth. I guess what is the Vilomshad for evil? Please put it in the chat. Like enlighten me. At every juncture, I feel like I'm gonna stop and make you guys answer questions. Like I'm not even gonna take the effort of googling something at this point, but you guys keep sending things to me. Um, right. Uh, the chat is so interesting. You keep getting a little distracted. But yes, anyways, before I move on to Famous Five, because I think we've talked a hell amount of Enid Blyton books before. Like we've talked about her. There is one thing flashing up on the screen. There's no place like home. Wizard of Oz, if you guys have read, give a little tiny shout out. Um, very, very nice books that I had also read apart from Wizard of Oz. Like one name that I'll take is Alice in the Wonderland, right? Gulliver's Travels was another one, and now I'll keep taking a couple of names because this is what I want to talk about next. Right. Abhi, for now, I'm gonna keep my screen blank and read out from my diary because मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं.
Right. We talked about Tintin, we talked about Asterix. Like I said earlier on, comics itni nahi hai is list mein. These were the only two. Hardy Boys, because again, somebody had mentioned this in the chat as well. This was mentioned in the poll that I had shared. Shakespeare for kids. This was very interesting. Somebody had put this out. Ki, all these books that he was writing, but like the abridged versions of it, what we were reading in like school. You remember जब हमारे chapters होते थे कि ये इतने इतने sections for poetry, इतने sections for prose, और एक फिर वो एक grammar book होती थी. I don't know how many people even focus so much on grammar. Like I feel like it is the need of the hour. It's such a necessity because now when you grow up and you realize that your spoken skills and your communication, that's a it's not only a skill, it's basically something that just takes you forward in life. If you're not able to communicate properly with people, I think it just makes everything very difficult. So something that I remember that grammar books have taught me, and also uh, a great number of English teachers that I had, starting with my mom, because my mom's herself an English educator, and she has instilled in me this love for reading, and I continue that spirit. I think even when I have kids someday, I'll be like, पढ़ो यार पढ़ लो देखो तुम्हारी नानी कहाँ करती थी because I myself I don't think I'll be as persistent as her, but she was very keen to introduce new things to us. um, I want to talk about my earliest reading experience. Because I've talked about my mom, I always think about the first time that she had brought me a book. So this was one of those encyclopedia sets that she had got me, ki A to Z. Like this was my Joey moment where Joey gets that one letter, right? That one alphabet ka encyclopedia, और वो उसमें से सब सीख लेता है. Volcano, voluptuous. He reads all these different words that he learns with the letter, starting with the letter V. So for me, it was like that because I learned a lot of words that way. I don't know how much of a wordsmith was I back then. Like I definitely with time picked up a good chunk of key. Oh, these are words I can use, and like in daily conversations, I used to use words like that. And my friends used to be like, Tanya, what? Oh, I have never heard this before. Like, please explain. But yeah, I think my earliest experience was that reading encyclopedias, and then moving on to a point when when I was again, this is something I spoke about on the reels that I had shared for Chalchitra earlier on. मैंने इसकी बात की थी. There's a book by Gerald Durrell. It's called My Family and Other Animals, and it's wonderful. Like I don't know how much of Gerald Durrell is out there in the literary space. Like I don't see much of him either now. But what a wonderful book, yeah. If you have some time, if you have a Google page open in front of you, just pop in that name and check. Basically, how a family has recently moved to Greece, how they've set a new house in this very rustic little suburb, and there are these tons of animals that they've moved in with. About 13 animals तो इनके पास होते हैं, and different varieties and species. It's very interesting like how they're navigating through it. Um, because I talked about Enid Blyton earlier, now this is where I wanted to talk about some of her, books that we had initially started with. Let's come back to that. Uh, Chat में किसी ने लिखा है कि there used to be a fight in my school during the library period for the Guinness World Record books. राइट क्योंकि मैंने पहले बात की अबाउट encyclopedias ये वो राइट वो एक होता था who why how who's the fastest animal, how many degrees temperature is in the southern hemisphere vis-a-vis the northern hemisphere,
वाई में तो हजार क्वेश्चंस तो मेरे पास वो होती थी some of those quizlets or another very interesting were these two hosts and growing up I'm digressing a little bit but I used to really like Derek O'Brien when he used to write those Bonvita quizzes मैं क्विज टीम में होती थी अपने स्कूल में सो आई रिमेम्बर जस्ट डिवाउरिंग लाइक अ bunch of these questions जिनका अता पता ही नहीं जिसको लेना देना भी नहीं होता था and then just for fun's sake like I used to quiz my brother all the time I was like okay what is the capital of Assam you know what is the capital of this place and I used to pride myself on knowing a lot of geography thanks to Bonvita quizzes. I also used to really like Rajdeep Sardesai hosting and organizing some of the timeless, you know, these quizzes. If you just put it shoot through Rajdeep Sardesai in your YouTube search box, I'm 100% sure you will find so many of these interesting quizzes that he's done on general knowledge in general knowledge in general, lots of them. So yeah, so encyclopedias, right? A lot of people have read encyclopedias. That's a good thing. Evergreen, Enid Blyton. I'm going to pick up these books, show them to you again. Famous Five, we'll start with that. How many people have read Famous Five? Yes, knows. Famous Five, I think, was one of the first Enid Blyton reads for me. और फिर उसके बाद आई थिंक सीक्रेट सेवन था और एक एक करके ना उसकी वो भी अच्छी लगने लगी मुझे कि पेपर बैक केप्ट चेंजिंग लाइक दे स्टार्टेड एडिंग ऑल दीज ग्लॉसी शीट्स और इनके एनिमेटेड कैरेक्टर्स भी ना विद टाइम थोड़े से चेंज होने लगे लाइक जैसे स्कूबी डू फॉर इंस्टेंस टेक दैट टाइमलेस कैरेक्टर स्कूबी डू के साथ जब शुरुआत में आई थिंक वो when they had started telecasting it for the first time, like जब वो TV पे आया था, I'm talking about the TV characters, and then when they made the movies out of it, तो जब वो humanistic sort of humans started playing, and then Scooby Doo is actually a dog, like do you get what I'm trying to say? That was very interesting for me. तो वैसे ही famous five की किताबों में there was a whole it was like an upward going ladder wherein पहले famous five books weren't as like you'd see the illustrations here that I'm talking about very give you that kind of appeal also of a very the time it's written in right it shows you like if you can see um, drawings here illustrations here ज़्यादा effort नहीं है ज़्यादा colors नहीं है it's very monotone and monochromatic but when you look at something like Enid Blyton's books now what she's done like if I had to pick the next one that I picked up here there are more colors here right and so many like different characters like because we talked about anthropomorphism before and we talked about how animals are getting all these qualities of human beings um somebody's written that glad you didn't pick up metamorphosis then oh my god that would have been a whole Franz Kafka like mother had the OG Enid Blyton books right all of our mothers and our fathers and our older siblings like I've been an older sibling in my family so mere liye to I got a special treatment like my first books were my first books huh for my brother his first books were my second hand borrowed books um were you guys first kids were you siblings like just send me that in a quick chat message as well because I want to just quickly see how many first generation how many second generation kids like I mean like not first generation like I meant matlab, you get what I'm saying sibling and non-sibling were you a single child did you have brothers sisters अच्छा हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है आई एम नॉट गोइंग टू डिसएग्री दैट सेकंड हैंड बुक्स समटाइम्स आर फाइन बिकॉज यू गेट annotations but that is only given see that's a given when your sibling is a smarty like me I am going to take full credit for this I was one of those kids who used to flag like dog ears was my thing with books another thing I used to do was which I still do but more so with my diaries these tiny flags that I make और वो मैं डाल देती हूँ ऊपर and
एनोटेशंस पर से इतना नहीं, बट मैं वो ज़रूर कर देती थी। मैं ना वर्ड मीनिंग बहुत लिखती थी, बिकॉज़ मेरी एक तो ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू हैव दैट पॉकेट डिक्शनरी ऑफ माय ओन, एंड आई क्रिएटेड अ न्यू डिक्शनरी ऑफ माइन। एंड आई टेल यू अबाउट दिस वेरी interesting experience. I'll go on to like the pocket dictionary experience, but before that, I want to show you a cute little picture of my family. That is my brother, my little brother, and that is my mom. I don't know why I felt the need to do that. Interesting. Spellings and dictionaries से मुझे इतना याद आया था, and I wanted to share this one experience of mine. Um, so when I was in third, we were doing a chapter SST, social science का हमारा एक chapter था, and we were reading about air, vacuum वगैरह वगैरह कुछ तो था on was it a geography chapter? Was it something else? Nonetheless, I remember that मेरी जो टीचर थी सोशल साइंस की, उन्होंने ना वैक्यूम लिखा था बोर्ड पे, एंड she wrote VACCUM as the spelling of vacuum. Now, quickly before I move on, I want to see in the chat if there is anything wrong with what I said. In fact, let me write it up on screen so that you guys know what I'm talking about. Right. देखो, I want to put it up here. क्या गलत लग रहा है कुछ? If you guys think there's anything wrong with this, just write या बताओ. राइट, किसी ने पॉइंट आउट कर ही दिया. स्पेलिंग गलत है, बट सी मैं होती थी, आई वाज इन व्हाट ग्रेड 3, एंड द फर्स्ट टाइम माय टीचर हैड रिटन दिस ऑन द स्क्रीन, मैंने देखा था कि वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, तो मैंने जाकर अपनी टीचर को करेक्ट किया था. So this is where my pocket dictionary really came in handy. Pocket Dictionary say now I can see that Vaibhav is here, and I हाय am हाय हाय you व्हाट्स heard अप me. तो अभी हम क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं about the different grandma tales. This is the next talking point for us. और बहुत सारे लोगों ने अब तक, आपने अगर देखा होगा चैट में, इतने सारे recommendations दिए हैं. You would be surprised yourself. नाइस नाइस तो कैसे हो पहले हाय हेलो कर लेते लाइक हाउ आर यू डूइंग इज देयर अ लैग गुड, मैं तो बिल्कुल ही बढ़िया. आई एम ऑल्सो रीडिंग एट द सेम टाइम चैट में लोगों ने क्या क्या लिखा है. बट हाँ, सो फार. अच्छा, मैं एक आपको चीज बताती हूँ. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. किसी ने ना पहले भी बहुत मेंशन किया था कि जब हम हैरी पॉटर की बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट ऑथर्स, एक जो आई थिंक बार बार कैरेक्टर जो रिपीट हो रहा था, समवन टॉक्ड अबाउट सीरियस ब्लैक, एंड मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो हैरी पॉटर का अंकल था या क्या था. सो हाउ मच ऑफ हैरी पॉटर डू यू रिमेम्बर? लाइक, विच वाज योर फेवरेट हैरी पॉटर बुक? या फर्स्ट आई वांट टू मेक श्योर इज देयर अ लैग नहीं नहीं, आई कैन हियर यू परफेक्टली. ग्रेट देन आई सेड हाय हाउ आर यू सो एक बार वो भी रिस्पोंड कर दो आई एम जस्ट ओह, ट्राइंग थोड़ा आई एम ग्रेट. आई एम गुड. हाउ इज योर आप कैसे हो? एक्सपीरियंस ऑफ लाइक लाइव स्ट्रीमिंग हाँ, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग गुड गुड. माय एक्सपीरियंस सो फार इज सो गुड. मैं आई थिंक लैग नहीं है. आई एम डेफिनेटली, मैं साथ में ना चैट्स की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, नहीं बट नहीं अभी लाइव देखो स्ट्रीमिंग. मैंने ज्वाइन क्यों किया है मैं आपको थोड़ा चिल करने के लिए लाया हूँ और थोड़े स्ट्रीमिंग के आपके फंडे ठीक करने आया हूँ ठीक सो ठीक ठीक. जस्ट वन थिंग एट अ टाइम फॉरगेट द चैट अभी मेरे से बात सब. करो हाँ. बट हाँ, स्ट्रीम सो फार हैज बीन गोइंग वेल. अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा वो हो जाता है मेरे लिए टू मॉनिटर थिंग्स एट द सेम टाइम. आई गेट अ लिटिल फ्लस्टर्ड. मेरे को समझ ही नहीं आता है कि हाउ डू आई कीप tabs on everything. आर यू स्टिल रीडिंग द चैट No, no, not now. ना ग्रेट सो या सो द आइडिया इज कि मतलब आप ऐसे स्ट्रीम कर रहे हो तो मेरा ये एक बस वो मैं चाहता था कि वो ये किसी चीज से ओवरवेल्म मत हो अगर मेरे से बात कर रहे हो तो अगर आप चैट पढ़ोगे तो सामने वाले को लगेगा अरे यार ये ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ना जब Mm. अपन ये जूम पे करते हैं या मेलिन पे करते हैं इंसान को ऐसे लग जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पे हूँ
लाइक राइट, मैंने ऐसे एक वो बना लिया कि प्रोजेक्शन बना लिया कि तान्या यहाँ देख रही है तो मेरे से हाँ, बात कर रही है। सो इफ यू लुक एनीवेयर एल्स तो वो आई कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। इट्स अ वेरी गॉट वर्चुअल इट, काइंड ऑफ एन आई कांटेक्ट। हाँ। एंड सो या आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक क्या कहते हैं, मेक श्योर कि आप ऐसे चिल हो जाओ, मतलब ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड आपके वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, वो टेडी बियर रख ही लिया आपने फाइनली। थैंक यू सो मच। या अभी एंड हाँ, दिलजीत कह रहे हैं वैभव जी विद द ज्ञान ड्रॉप। या या सम पीपल ड्रॉप मर्च, वैभव ड्रॉप्स ज्ञान, वेरी नाइस। और पता है, I mean, where's the lie? Like, या इनफैक्ट मैंने अभी कैमो यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऐसे ही एकदम से उठ के आ गया, बट लाइक आई हाँ, एम नॉट यूजिंग कैमो राइट नाउ। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट सीरियस ब्लैक, सो मैं थोड़ा हाँ, अच्छा खासा फैन हूँ हैरी पॉटर का। सो आई नो वो अंकल हैं एंड लाइक आई नो ऑल दोस थिंग्स। हम्म, मैंने पढ़ी भी है यहाँ पे कुछ बुक्स, आई हैव रेड लाइक बुक्स 4 5 6 7, एंड मूवीज मैंने काफी ढंग से सारी देखी हुई है। और मैंने बुक नंबर 6 and 7 2 बार पढ़ी थी। very nice। यस, वो हाफ ब्लड प्रिंस है ना, सिक्स वाली? यस, हाफ ब्लड फ्रेंड्स है। सो मतलब is audience wanting you to talk about like Harry Potter? Are you not a big Harry Potter fan? आई लाइक हैरी पॉटर, मेरी तो टॉप 5 बुक में था, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट आउट। बट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल हैड रिटन, तो इसलिए मैं बात कर रही थी, बट मैं कैरेक्टर्स भूल जाती हूँ वेरी ऑफन। आई फॉरगेट रॉन वीजली कौन, सिरियस ब्लैक कौन, एंड आई वाज लाइक ओके, दैट्स द ट्री। बट हाँ, Ah, nice. So, yeah, like I remember it very well. In fact, मैंने एक जो मेरी पहली वो बनाई थी, शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो भी एक ट्रिब्यूट ही था हैरी पॉटर को। इट वाज कॉल्ड प्लेटफॉर्म पौने 10। वाओ, सो या एंड हाँ, मतलब तो है, मतलब इनफैक्ट लाइक आई हैव हेडविग, डू यू रिमेम्बर हेडविग फ्रॉम हैरी हाँ, उसका पॉटर? आउल, हैव यू सीन दैट आउल? लाइक, या no, have you seen the soft toy that I have, Hedwig? ओ माय गॉड, अडोरेबल, कितना क्यूट है। Yeah, and my pet like जो मेरे like उस उनका नाम डॉबी है, उनका ओ बोल माय रहे हैं। गॉड, हाँ, अरे डॉबी, डॉबी Yeah, मेरा फेवरेट होता था। yeah. एक दो और Uh, कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगते थे, एल्बस डम्बलडोर, द मोस्ट ज्ञानी बाबा ऑफ ऑल टाइम्स। he I, okay, can people in the chat please tell me, is Albus Dumbledore more ज्ञानी or is Vaibhav more ज्ञानी? oh, What do you guys nice. think? Now Tanya has learned Dumbledore the versus streaming. Streaming सीख गई Tanya. Nice. see So guy, yeah. ज्ञान, Uh, chips टिप्पणी। there's this comment by and I'm really sorry for the bad audio quality, like video quality. Hey Chiranjeeb, hey Vaibhav, we have recently got through your videos, I also want to be a part of your team. यार सो ईमेल करो, हम ऐसे दे देते हैं चांस लोगों को अगर कूल ईमेल करते हो तो। सो वही है कि webber@chalchitrtalks.com पे आप ईमेल कर दो। अच्छा ईमेल लिखोगे तो मैं आपके साथ कॉल कर लूंगा, बोरिंग ईमेल लिखोगे तो रिप्लाई नहीं करूंगा। थोड़ा हो गया है वैसे एल्बस क्योंकि डम्बलडोर वाला कोच कोट भी डाल देना जरा वहां पे। या या पोकराज सिंह एल्बस लेग जी इज मोर ज्ञानी and like Aditya Singh, Vaibhav Mujildo. One of the things why I wanted to do like join your stream was कि मैं दिखाना चाहता था कि इंटरफेस कितना फास्ट फास्ट यूज करना होता है। हाँ, बिकॉज मैं आपको लास्ट टाइम जब मैं देख रहा था कि इंटरफेस इतना स्लो क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक इट बिकॉज वाज वंस यू या एपिसोड 1 में तो बिल्कुल ही नहीं था, प्लीज लेट्स नॉट या लाई। कहाँ था इंटरफेस? इस टाइम इट वाज स्लाइटली बेटर, बट एट द सेम टाइम हाँ, आप सही बोल रहे हो कि काफी फास्ट रखना होता है। दैट बहुत इज फास्ट समथिंग। रखना होता है। समटाइम्स मैं ऐसे क्लोजअप्स और इसमें भी करता हूँ सो दैट लाइक पीपल आर ऑलवेज लाइक गेटिंग सम काइंड ऑफ मोशन हाँ, ऑन देयर स्क्रीन्स, सो दैट्स आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई आपने एम नाम ग्लैड कि वो बैक टू बेसिक्स वाला आपके साथ सब सीख रहे हैं। इट्स नॉट या ओनली तान्या टॉकीज राइट नाउ, इट इज जस्ट अ होल स्ट्रीम वेयर एवरीबॉडी इज लर्निंग विद वैभव, तो वो ज्ञान एकदम ऑन पॉइंट है। yeah and yeah and guys, like we crossed 150,000 subscribers on Chalchitra Talks today. So वाओ, that is great. Like it took us, I sent messages to people जो भी like the YouTubers and the marketing people जिनको भी मैं जानता हूँ broadcast list में, like it took us 3.5 years to reach the first 100K.
and 7 Wow. days to reach from 100K to 150K. So yeah, that was great. Solid. One clap, guys, यार करो. Yeah. भेजो तो सही चैट में. Emojis तो चलचित्र भेजो. चलचित्र ओपी हो जाएगा इस चैट में. OP. या एंड हम और क्या कर सकते हैं आपके इंटरफेस में? लाइक मेरा मन कर रहा है हैरी पॉटर टॉकीज तो हो गई, टेक टॉकीज वैभव हो गया. ओके, But इनके नाम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हाउ डू वी प्रोनाउंस द नेम? किसका? ये जो आ रहा है सिस्का सुशी. मैंने इसलिए किसका बोला क्योंकि I was like I want you to say it. मेरे से बोला नहीं गया. इसलिए that was a या trap. I was like आप बोलो. हम दोनों का नाम, मैंने अभी नाम भी डाले हम दोनों के, उससे अगेन थोड़ा टेक्स्ट आएगा. लेट अस चेंज आवर नेम्स, हाँ. स्क्रीन नेम्स. मेरा चलो आप डाल लो कुछ, मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ डॉबी. आई जस्ट मेड माय नेम डॉबी. One sec. आपको मिल गया? कहाँ से करते? ओ, देयर इज अ सुपर हाँ. चैट. देयर इज अ सुपर हाँ. चैट. इज दिस द फर्स्ट सुपर चैट ऑन योर लाइव स्ट्रीम? Yeah. Oh my God. Hey, there's a super Ooh, chat. Diljit. Flying Two kisses for you. Very, very happy. 250 के Thank स्ट्रीम you. जून से पहले हो जाने चाहिए. ए लाई नाइस दिलजीत. दिलजीत थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. ये तान्या ओपी हो जाएगा इस चैट में. तान्या की पहली Ooh, सुपर चैट है. we want. या फर्स्ट. अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ बट आई एम सो ग्लैड कि लोगों ने लिखा है. मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं. आपको हाँ बताओ ना. टेक्स्ट वीडियो दिख रहा है? टेक्स्ट वीडियो, उसके नीचे सेटिंग्स है. हाँ हाँ हाँ. सेटिंग्स में पार्टिसिपेंट्स में माय नेम लिखा है. ए शीला की जवानी. ओ शिट. अब किसी ने लिख अब 40 रुपीज मारे हैं तो यार थोड़ा कुछ एक एंटरटेनमेंट ओ शिट. फैक्टर होना चाहिए एटलीस्ट नाम चेंज करके तो तो. आपको अगली स्ट्रीम से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स भी बताए जाएंगे. ओके. नोटेड. Yeah. So guys, हाँ, this is a very good message by like Saika Sushi. पहले आप किताबी कैबिन्स पे 10,000 सब्सक्राइबर कराओ चलचित्र पे, लाइक 2.5 लाख से पहले. ठीक है, पहले इस पे वो करवाओ. हम्म. एंड आप डू यू आस्क पीपल टू लाइक द स्ट्रीम, तान्या? हाँ. एक दो बारी अभी मीटिंग कितने में I लाइक? was like guys एक दो keep बारी commenting. नहीं, मैं ऐसे करना होता. अभी 20 लोग दिख रहे हैं. आप ऐसे हर 5 मिनट में बोलना होता है. अभी आपकी 100 व्यूइंग हो जाएगी. आई एम टेलिंग यू, ये 4-5 ट्रिक्स है. अभी कितने ठीक लाइक्स हैं है. अपने? आई थिंक ज्यादा मैंने ना फोकस एक और बात मैं बोलूं आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी ओपन एंड वैसा कैंडिड कॉन्वर्जेशन हो गया है. मैंने जो ये इतनी टॉकिंग पॉइंट्स लिखी थी मुझे लगता है इनकी मेरे को आधों की भी जरूरत नहीं है बिकॉज आई कैन टॉक अ लॉट बट द प्रॉब्लम इज कि मैं बोलना इतना शुरू कर देती हूँ that I keep forgetting कि अच्छा चैट में there are so many people wonderful people जो same thoughts share करते हैं और मैं उतना शायद I don't think I'm getting to them like I keep moving अपने pace पे कि अच्छा मैंने ये बनाए हुए हैं पॉइंट and then I keep तो moving आपके forward. पास ओवर आर्किंग थीम्स होनी चाहिए कि ये 3 या 4 थीम्स की बात करूंगी और वहां पे लोगों को इन्वॉल्व कर ले, जैसे कि आप लार्जर जो बात करने आए हैं उसी की बात करोगे. हम्म. दैट विल रियली हेल्प यू. आज तो एंड बहुत अच्छा था लाइक आई हैड दीज टॉप 5 बुक्स एटलीस्ट ये बात हो गई मेरी. आई वाज थिंकिंग इसके बाद भी आफ्टर हम आप मैं दोनों वी कैन टॉक अबाउट दिस कि मुझे ग्रैंडमा टेल्स और वो मेरा पहला स्टिकर था ना वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट मॉरल्स ऑफ द स्टोरी कि हर स्टोरी या में मॉरल्स होते थे हाउ सारी नानी दादी सुनाया करती थी हमें कहानियां सो गॉट इट. लेट सो मी सी. वी बोलो. वैभव फ्रीज हुए मैं फ्रीज हुई हूँ गाइस यू कैन हियर आप मी. फ्रीज हो. या आप फ्रीज हुए हो. अच्छा. अब आ नहीं आई गए. थिंक या यू हाँ ओके. ओके. so मैं बैक. there are 35 likes. We need to take it to 50 likes. जल्दी से 50 likes. ओके. Yeah. And जल्दी से 50 likes करो guys. And now let's also talk about what you were already talking about. फिर Grandma Tales. लेट्स गेट बैक टू दैट सो जहाँ पे हमने शुरू किया था आई थिंक वही बात करते हैं फिर से. नानी दादी की कहानियां किस किस को पसंद थी चैट में लिखो.
बताओ what you really liked. हम्म। मैं स्टार्ट करती हूँ बिफोर बिफोर पीपल इवन स्टार्ट राइटिंग चैट में। मेरी एक एक कहानी जो सबसे फेवरेट थी वो द क्रो हु यू नो वो ही फिल्स अप दैट पिक्चर, उसमें वो पेबल्स डालता है, पानी आता है एंड ही ड्रिंक्स इट। वो मेरी फेवरेट थी। टेल मी वेरी अच्छा वो, क्विकली। आई हाँ हैव अ वेरी बैड जोक कि बताओ। अच्छा आप ग्रैंडमा टेल थी, मेरे को लगा वो तो स्प्राइट का एड था, सेवन अप का एड था। इट वाज अ सेवन अप एड। ओह माय एक तो गॉड। चतुर नाथ पर होशियार, गाइस कितने लोगों को वो एड याद है? इट वाज अ वेरी स्मार्ट एड। वाओ डू यू रिमेम्बर यस दैट एड? वर्ल्ड कप के आई डू। टाइम पे आता था। मुझे या उसका वो जिंगल याद आ गया। थैंक्स टू यू। गन्ना अन्ना अन्ना ने नो नो। या सो ओवर द टाइम कितना चेंज हो गया यार। अब मैं जब सलमान खान को देखती हूँ, इट्स नॉट स्प्राइट पर से बट वो 10 बस वो जो ही डज दैट। या या ऋतिक रोशन भी करते हैं ये जो करते हैं। ओह आई फ्रिकिंग हेट इट। मुझे इतनी घिन आती है but मैं तभी भी देखती हूँ। एक ये, एक थम्स अप और एक रणवीर सिंह। आज हाँ कुछ तूफानी करते हैं। या गाइज चैट में लिख दो आज कुछ तूफानी करते हैं इफ यू फील दैट द स्ट्रीम सो फार इज गोइंग। नाइस। जस्ट राइट हैशटैग तूफानी। आपको आ रहा है ये गेम धीरे धीरे, मैं तो ये देख के खुश हो रहा हूँ कि चैट इंटरेक्शन प्लस बस फोकस है प्लस बस इंटर। और बोलो। तीन आपको बेसिकली तीन ट्रायंगल्स है चैट, लाइक जो इंटरफेस का साथ, लाइक प्लस हम्म। लाइक जो आपकी चैट से चैट को जो आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो, इंटरफेस चेंजेस, और प्लस जो बात चल रही है, उन तीनों का अगर आपने ट्रायंगल बैलेंस कर लिया तो आप अभी तन्मय की दुकान बंद करा दोगे। ओह। या तन्मय ओपी। कैन वी प्लीज राइट तान्या वर्सेस तन्मय? ओ लाइक ओ थोड़ा सा चीजें थोड़ा ऊपर करते हैं। लेट्स गेट दिस द इज नाइस, फायर। दिस इज काफी सही, काफी सही। वी लाइक तान्या वर्सेस तन्मय। आई वांट टू सी दिस क्योंकि नाम भी बड़े सिमिलर हैं यार। तान्या वर्सेस तन्मय। या लिखो यार क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखो कम ऑन लाइक मेक इट क्विक। या थोड़ा टाइम लगता है लोगों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए हाँ। उनको। उफ तो आया है किसी का। या इंटरेस्टिंग यार। मैं या बाकियों की डिस्कशन जो करनी थी, मैंने ना ये एक चीज बहुत सुनना था लोगों से। आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक अर्लीस्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। वो शायद मैंने इतना नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि अरे बड़े लंबे रिस्पॉन्सिव होते हैं तो लोग जब तक टाइप करेंगे काफी वो लैग हो जाता है। बट मुझे बहुत बहुत मन है कि पीपल टेल मी एंड इफ यू गाइस आर स्टिल वेरी वेरी कीन ऑन शेयरिंग, मुझे बताओ कि वो एक कौन सी मेमोरी है, फर्स्ट बुक मेमोरी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट बुक मेमोरी आप लोगों की जो बहुत ही क्लोज टू योर हार्ट, जिसने भी फर्स्ट बुक इंट्रोड्यूस की हो। या Harshita is saying my grandmother used to form own stories. Ramayan was the first story I heard from my mom. Nice. And हम्म। एक तो गाइस जो प्रीतम कह रहे, प्लीज डू ब्रिंग पुनीत सुपरस्टार ऑन द मेन चैनल। गाइस व्हाट इज मेन चैनल? किताबी कैबिन्स इज आवर मेन चैनल। ओके स्टॉप सेइंग इट लाइक कि वन इज मेन एंड द अदर इज। किताबी कैबिन्स इज द मेन चैनल। ढंग से हर चैनल को इज्जत मिलनी चाहिए, हर चैनल इंपॉर्टेंट है हमारा, और अब मेरा सारा फोकस ही इन साइड चैनल्स पे है। सो स्टॉप कॉलिंग वन मेन चैनल, जस्ट लाइक अ पॉइंट फॉर फ्यूचर। एंड पोखराज इज सेइंग लिटरेचर इन इनफेसी इन दिस ऐसे आई शैल। मेरे को समझ नहीं है इनका कमेंट, आप समझा सकते हो? पता नहीं। इन दिस ऐसे आई हैव अ फीलिंग ये वो वाला पॉइंट था जो मैंने बीच में पूछा था कि फेवरेट मेमोरी या अर्लीस्ट मेमोरी शायद। या अरे मेरे को नो, लग रहा है आई माइट बी रॉन्ग। मेरा टेक सुनो फिर अपना हाँ बताओ। आप ऐसे बैठो ना। अरे आप अभी जैसे ऐसे बैठो ना, वो हम थोड़ा बराबर बराबर होंगे। हाँ और आगे आओ। और ऊपर। हाँ ग्रेट मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेट। मेरी शक्ल एकदम एकदम सामने है। या नो बट दिस नाइस। इज ग्रेट। आपके हेड स्पेस कभी भी ज्यादा, आप देखो आप पीछे होते गए, आप वापस खराब हो रही है। ओके सो यू नीड टू बेटर बी आगे आगे। आगे। या ठीक है फिर एकदम बैक तन के देखो खड़ी मैं हो। ऐसे कभी कभी फिर प्रकट होऊंगा आपके स्ट्रीम्स पे, ये हेल्प करने, तो जितनी मिल रही है ले लो। ओके एपिसोड 2 मत देखो गाइस एंड का, प्लीज बिगनिंग का देख के बाय बाय। मजाक कर रही हूँ but थैंक्स आई अप्रिशिएट या दैट।
सीक्रेट ऑफ प्लेटफॉर्म 13 किनू दीदी सिंह। आपके अभी कितने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं लाइक चैट में? अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है. There's literally no one who I can see. ओके ओके, आई वाज जस्ट आस्किंग। I hope people join यार. एक तो इतना लेट है यहाँ पे तो 2:30 बजे हैं. तो आई डोंट थिंक दिल्ली में ओह तो कोई है, बट हाँ, आई एम श्योर इंडिया में से किसी ने ज्वाइन किया होगा. आई एम ग्लैड. मेरी मॉम को तो मैंने भेजा था, मैंने बोला मम्मा आप आना. नाइस। दादी को भी लाना. ओह नाइस। So, Diljit is saying Saras Kathkunj was short story collection that accompanied the main Hindi literature book, and I read in class 8. Uh, and I read class 8 तक के books in class 5. Wow, that is amazing. Nice. And Diljit is also a godfather, guys. You can also become a godfather through website, like through YouTube, through patreon.com. Bunny और आपको हमारे book club और इनकी access मिलेगी. Hey, how do you like the book club? You have been there, no? बड़ा आई लव कि आप लोग कितने सारे रोज ही रोज मैसेजेस भेजते हैं. लाइक आई सॉ समबडी हैड रिटन आज कुछ एक कोई बुक भेजी थी यश ने. और वेरी इंटरेस्टिंग. वानी भी जो कोट्स भेजती है मुझे बड़े अच्छे लगते Yeah. हैं. Now एंड some आई ऑलवेज फील द नीड कि मैं अपना व्हाट्सएप स्टोरी वो बनाऊं. बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा nice. लगता है. Now some suggestion. आपने डाला हुआ है first book memory. What's your हाँ. first book memory should be the text which should be coming. So अगर कोई कभी भी join करता है, so हाँ. they have in वो कि अच्छा बात क्या चल रही है. फेयर. मेरे को इन्होंने लेफ्ट में कर दिया, मेरे को अब इन्होंने हाईलाइट कर दिया. Yeah. This मैं is रियली वेरी. Tanya's world and we are living in it. गाइस वेयर इज द लाई, लाइक सीरियसली. अच्छा मेरे से बट स्पॉटलाइट हटाएंगे मैम? देखो, डिड आई डू इट राइट? अब ओके, बेटर है. हो गया. मैं पास आ जाऊँ फिर से, सो दैट we're Yeah. at the same See? eye level. Yeah, same Got level. it. Yes, I got it. आपका थोड़ा थोड़ा ये लैग आता है, ये बीच में फ्रीज हो जाता है, तो हमें इसका भी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होगा. ठीक है. बट या अब तो गाइस एंड बाय द वे आई विल बी बैक इन इंडिया नेक्स्ट स्ट्रीम ऑनवर्ड्स. तो अब सो मैं शी इज आपके टाइम गोइंग. पे होंगी. अब ये जो मैं स्टोरीज डालती हूँ ना 2:30 AM IST, कोई मैथ करने की जरूरत नहीं है. अब ओह हम नाइस. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में डिस्कशन करेंगे हर वेडनेसडे 8 PM विदाउट फेल. नहीं आए यार तो फिर तो भाई बीटी, बिल्कुल बीटी. नाइस नाइस. तो बीटी चलो लाइक सेम लिंगो है, हम भी बहुत बीटी बोलते हैं. नाइस. आई फील कीनू लाइक हम बहुत फ्रैंक हो गए हैं अब इस कीनू दीदी चैट. से माय फर्स्ट बुक मेमोरी चाचा चौधरी मैगजीन एंड लाइब्रेरी पीरियड. Yeah. I have a very personal first book memory. It's like something I haven't spoken about much and it doesn't make a lot of sense, but like it's very, very whoa. So, do you want me to share it? बताओ ना. Different. बेसिकली यार मेरे घर के पास एक वैन आई थी एक बार, जिसमें Mhm. जिसमें बहुत सारी बुक्स थी. आई थिंक एक पोर्टेबल लाइब्रेरी काइंड ऑफ अ थिंग थी. एंड आई थिंक आई वाज वेरी वेरी यंग, मे बी फर्स्ट स्टैंडर्ड और मे बी यंगर देन दैट. और वो अच्छा. वैन आके हमारा एक स्वनपथ है उसके चौराहे पे खड़े हो गए. जब मैं उसके अंदर गया था और मैंने एक पतली सी बुक खरीदी थी और मैंने हम्म. वो जिस दिन आके पढ़ी थी. सो मेरे को लगता है कि थ्रू आउट माई लाइफ जो विजुअल्स मैंने उस बुक में देखे थे ना, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता रहूंगा. बेसिकली वो एक चाय की स्टॉल की कहानी थी जहाँ पे एकदम से स्काई को एक्सप्लेन किया गया था कि स्काई ऑरेंज हो गया, बारिश होने वाली है, गांव में लोग हैं जो बस भाग रहे हैं इधर उधर, एंड इट्स अबाउट टू रेन, इट्स अबाउट टू रेन. वेरी एटमॉस्फेरिक पूरा उसमें सीन था. हाँ. And till date I like atmospheric books a lot, where there is a very vivid description of weather, how things are वाह. like apart from the character, वो सारी चीजें कैसे explain की जाती हैं. So वो जो visual है ना, the color of the sky which was depicted in it, हाँ. and me going into that portable van of books, it's something very very close to my heart. Very very मतलब ऐसे मेरा मूड अच्छा हो गया 20% ये बोलते ही. वो कुछ यू टेक अ ट्रिप बैक मेमोरी लेन, वो नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो एंड वो याद आती है. ट्रू. इंटरेस्टिंग. एंड मेरी एक कीनू बड़ी अच्छी थी. हम आपकी सिमिलर.
या वी आर गेटिंग टू योर मेमोरी, बट कीनू दीदी ने कुछ बात की है कि फ्री में बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। नो, इट्स अ पेड ग्रुप एंड यू कैन जॉइन इट। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लाइक आपको मिल जाएगा। चलचित्र टॉक्स पर ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप ग्लैडिएटर या गॉडफादर बनते हैं सो आपको बुक क्लब की एक्सेस मिल जाएगी। ग्लैडिएटर से आप बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, गॉडफादर से आपको हमारे सारे क्लब्स की एक्सेस मिल जाएगी। मूवी क्लब, बुक क्लब, साइंस क्लब, क्विजिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, ऐसे 8 क्लब्स हैं। And Anuj is also a godfather. He has written The Iron Giant read in the fourth class to impress someone and was impressed myself. Very nice. Very nice. तान्या की FPS रेट हिल चुकी है, बट हम तान्या की मेमोरी जानेंगे अब। इंटरेस्टिंग। और अब मेरी मेमोरी मैं सोच रही हूँ, आई हैव एक्चुअली गॉन इनटू अ जोन जहाँ मैं। अच्छा, एक लाइक डू मी अ फेवर तान्या, आपका वीडियो बहुत अटक रहा है। कम टू द नॉर्मल कैम वंस। नॉर्मल। क्या ये बहुत ज्यादा अटक रहा है? Diljit, thanks for like promoting this. Yeah, my first mem. अब तो अच्छा बहुत ये, खराब हो गया। हाँ ये तो बहुत खराब हो गया। आई थिंक इट्स एन इंटरनेट इशू। फेयर इनफ। आप पुराने पे ही आ जाओ। कनावी सिंह, माय फर्स्ट मेमोरी वाज दैट पीटर पैन बुक विद टॉकिंग बटन्स। वेरी नाइस। या गीतांजलि सिंह, माय फर्स्ट मेमोरी वाज शुड बी फोर्स्ड वंस एट स्कूल। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। या मेरी वाली आप मुझे कौन? याद ही नहीं आई, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट जेरोनिमो स्ट्रीटन, जिससे मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी। वो या मेरी फर्स्ट थी, फर्स्ट तो नहीं बट हाँ वो आई टॉक्ड अबाउट दिस वन कॉन्सेप्ट, और मैं चैट को ना फिर से आई वांट टू इंट्रोड्यूस इट। इट्स अ वेरी कूल वर्ड टू, लाइक अ लिटरेरी वर्ड टूल दैट यू टॉक अबाउट। सो मैंने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की बात की थी। इट्स सच अ बिग वर्ड, तो मैंने सिलेबल बाय सिलेबल ब्रेक डाउन किया। एंड बेसिकली व्हेन यू आर assigning humanistic characters to an animal basically, तो बड़ी सारी बुक्स की तब बात हुई थी कि फेमस फाइव, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ अदर बुक्स टू। तो हाँ, मेरी वो थी कि जेरोनिमो स्ट्रीटन वन ऑफ द फर्स्ट। गॉट इट। सो your internet is very problematic and मैं दिस तो विल गेट जाने वाला था, फिक्स्ड। पर अब मैं डर गया हूँ कि मैं चाहता था आप कंटिन्यू करो, बट कुछ आपको करना होगा। देख लो अगर हाँ कुछ हाँ, कर सकते हो तो। अब तो लाइक वंस आई एम मूविंग बैक टू इंडिया अब तो सॉर्ट हो जाएगा नहीं, मैं सीन। कह रहा था अभी कुछ करना होगा जिससे कि अभी कुछ बाकी करना स्ट्रीम पड़ेगा। ओ माय गॉड, अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करती हूँ और क्या। मुझे लगा मैं या इंडिया तक वेट कर रही ऑडियंस। नहीं नहीं, वेट नहीं करेगी ऑडियंस। एंड टिंटिन कॉमिक्स की बात हो रही है एंड मैं एक बार खुद पे लाइक स्पॉटलाइट ले आता हूँ जब तक लाइक हाँ, तान्या लाइक अपना इंटरनेट ठीक कर रही है। एंड या सो टिंटिन की बातें हो रही हैं, तूफानी बोल रही हैं हर्षिता। एंड दिस इज इट गाइस। और बताओ क्या चल रहा है? हाउ डू यू लाइक माई न्यू हेयर स्टाइल? एंड यही है अभी लाइफ में, और कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। 9-10 हो गए, शिट। लॉन्ग डे, लॉन्ग डे, लॉन्ग डे। या ताने वहां सोच रही हो कि भाई मेरे 2:30 बज रहे, तुम 9-10 में ही। या ओके, सौरभ इज ऑल्सो ज्वाइन इन। सौरभ, व्हाट्स अप? सौरभ, यू आर ऑन लाइक लाइव नाउ। सौरभ, कैन यू hear me? सौरभ, ओके। सौरभ बताओ। हाँ, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दीज इश्यूज। एंड हरविंदर अभी स्कूल ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। सौरभ, are you saying something? Oh, I think this is Tanya only. Shit. Tanya? Saurabh? Can you guys हाँ hear जी, एक me? सेकेंड, आई थिंक इट्स मी ओनली, हाँ। आई हैव जॉइंड विद सौरभ, वाओ। ईद का एक चांद सौरभ भाई नहीं, ईद का चांद आज भी नहीं निकला गाइस। इट्स तान्या ही निकली है ईद का चांद। वापस आ गई हूँ मैं गाइस विद अ बेटर इंटरनेट।
ये बताओ। कितना बेटर है, ये है कितना बेटर है, ऐसा लग रहा है आई एम टॉकिंग टू अ ह्यूमन बीइंग फाइनली। थैंक्स, थैंक यू सो मच। लैग नहीं वापस है ना इस अटकने बार? लग गया, वापस अटकने लग या कॉल इट अ नाइट। नहीं, मैं वाईफाई का पासवर्ड बोल रही थी वैभव, मेरे वाईफाई का पासवर्ड है कॉल इट अ नाइट, प्लीज व्हाट डिड यू हियर? नाइस नाइस, अच्छे स्ट्रीमर बनोगे, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, लाइक कि मैं चेक करने आया था कि ओके लाइक तान्या पुल ऑफ कर पा रही है या नहीं। नहीं नहीं, आपके हाँ। जोक्स तो और लैंड करते हैं, आपके 8 में से 3 जोक्स लैंड कर रहे हैं। सो अगर आपके 8 में से वेरी थैंक यू, वेरी कैंडिड। काफी आपने एकदम, मेरा दिल यहाँ है, आपने मारा यहाँ पे है, बट ठीक है, गुड। हाँ, आपके जब 8 में से 6 जोक लैंड करने लग जाएंगे तो तन्मय का करियर खत्म हो जाएगा। बस तन्मय वर्सेस तान्या फिर से लिखो गाइस, डू इट, हैशटैग या तान्या वर्सेस तन्मय। बट दिस इज स्टिल फार बेटर देन योर लास्ट इंटरनेट, आई लाइक एम कि ग्लैड, थैंक यू सो मच। हाँ अभी जेन्युइनली ऐसा लग रहा है नॉर्मली बात कर पा रहे हैं। एंड या सो अब आपका इंटरनेट अच्छा हो गया तो ठीक है भाई, हम चलते हैं राजपाल यादव स्टाइल। और अब आप संभाल लो। और सॉर्ट। या पीपल आर लिसनिंग टू यू कानव, और लाइक आपकी बात करें, एंड लाइक आई विल टेक योर लीव नाउ। होप यू थैंक वर, यू। या आई होप आपको मजा ही आया and मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया आपको। नॉट एट ऑल। ज्ञान मोर देन डम्बलडोर, वी या वांटेड। नाइस नाइस नाइस, चलो आई विल टेक योर लीव नाउ, Alrighty, thank you. बाय। Bye bye. Hello chat. I'm back. कैसा चल रहा है? Guys, quickly लिखो कैसा था the drop in by Vaibhav. मजे आए, बात की सबने। I think बहुत reinvigorate हो गई spirits. I'm glad. शुभ रात्रि लिखा है कुछ लोगों ने। Fine. That is also my cue to actually call it a night. Before that इज डन, मैं क्विकली पूछना चाहती हूँ लोगों से चैट में कि अगली स्ट्रीम में क्या करें। सेंड मी कमेंट्स, सेंड मी योर चैट रिस्पॉन्सेज। ओपी ओपी आ गया है, वेरी नाइस। दिलजीत, आपसे तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी जेनरस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। और भेजते रहे। नहीं, but seriously, I appreciate it, and super chats very welcome. Ugly stream onwards. I have really focused on the विशेष टिप्पणी that Vaibhav has given. मुझे लगता है मैं अगली स्ट्रीम में भी ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करूंगी. So you guys are learning as much as I am. देखो, works both ways. Book movie adaptations, that is something we can do next stream onwards. I like. Um, ये मुझे लगता है वानी इज द बेस्ट जज एंड शी वुड बी एबल टू आंसर दिस। चलचित्र के पेज पे ये आएगा, आई एम नॉट एंटायरली श्योर। मर्डर मिस्ट्री इज अनदर सजेशन दैट्स कम अप। 100%, 100%, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आई would love to talk about, क्योंकि किसी ने आज की स्ट्रीम में नैंसी ड्रू, somebody had also written ब्योमकेश बख्शी, मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था ये, either it was on the stream or somebody had sent it chat में। Sherlock Holmes, let's talk about this. Let's talk about Arthur Conan Doyle because he's one of my favorite writers. H.G. Wells किसी ने लिखा था आज. I want to talk about the Invisible Man. I want to talk about all those books as well. यार मैंने एक book आज miss कर दी, and I'll end the night on this. Diary of a Wimpy Kid किस किसने पढ़ी है? जल्दी जल्दी बताओ. Yes, no. Wow, nice. Thank you. I will definitely keep my notes handy. And आज भी थे, but I'm glad that there's a certain sense of direction that has been instilled in me. Um, Diary of a Wimpy Kid was so good, right? Like so good. One of my favorite ones. और उसमें वो भी अच्छी लगती थी मुझे, उसकी जो मूवी बनी थी, उसका जो भाई होता था मुझे बहुत फनी लगता था. Like Roderick Rules, Roderick was one.
Alright, ठीक है. Mystery suggestions we talked about. Book movie adaptations करते हैं, ठीक है. And 8 p.m. IST every Wednesday. Please join करो. Keep liking the stream. अभी भी keep liking it. बंद नहीं किया मैंने, खत्म नहीं किया मैंने, बात करनी नहीं बंद की है. So keep doing that. And we want to reach to a stage where we are like, तन्मय कौन? Too soon, huh? Too soon, Tanya, too soon. But one last time, just for my ego boost, लिख दो यार तान्या versus तन्मय. बहुत flattery हो जाएगी. I will end my night on a good note. But cool. ठीक है. Thank you so much. Very very nice to talk to all of you. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. तान्या versus तन्मय मैं wait कर रही हूँ यार. मैं बंद करूँगी फिर stream. लिख दो one last time. And yeah, fun stream. I hope all the suggestions you guys liked it. At least जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, all those top 5 books, make a note of it because I love them and I hope you get to read them. Judy Blume जरूर पढ़ना, one of my favorites. Still, always recommend her. All right, good night then, guys.